Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are continuing our series on the Cpet 2024 exam solutions. In this video, we will be covering questions 41 to 80. We will go through each question in detail, discussing the concept and solutions, which will not only help you to understand the current exam, but also prepare you for your future exams. Okay, so let's start with question number 41. Question number 41. The kinetic energy of a planet revolving around the sun has maximum value when the planet is closest to the sun. Okay, so B is your correct option. Okay, so you can remember here, we know the planets moves in elliptical path around the sun. So here you can see, let sun be here at this point and planets at this point. So kinetic energy will be maximum when the planets will be at this point, that is the closest point, because velocity is maximum here, and you should remember the expression for maximum velocity here and for this farthest point. Okay, this point is also called as perigee and this is apogee. So maximum velocity, okay, so this is square root under 2gm r2 by r1 into r1 plus r2, and the minimum velocity equals to square root under 2gm r1 divided by r2 into r1 plus r2. Okay, you should try to remember also in terms of the semi-major axis and semi-minor axis. Okay, as we know, eccentricity E equals to square root under 1 minus b square by a square, r1 plus r2 equals to 2a, r1 into r2 equals to b square. So the maximum velocity in terms of a and b, that is your capital G m by a 1 plus e by 1 minus e. Okay, then minimum velocity equals to square root under G m by a 1 minus e by 1 plus e. देखो ये r1 कौन, r1 है डिस्टेंस टा between this point and this planet and r2 is this. Okay, okay, अच्छा देखो ये गोटे क्वेश्चन अछि, कमेंट सेक्शन ले आंसर लिखिबो जेमति के देखो ए जो प्लैनेट सन चारिपटे मूव करछि एलिप्टिकल पथ रे because of the gravitational force, because of the gravitational force. तो तमे कमेंट सेक्शन ले लिखिबो this gravitational force is central force or not, this is central force or not. Okay, like जेमति हमें जानि छे कोन न्यूक्लियर फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स. ओके, सो तुमको आंसर करिया को अछि कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स कि नो. नेक्स्ट 42. A plain monochromatic electromagnetic wave of frequency f enters a conducting medium of electrical conductivity sigma. The skin depth for the conducting medium is proportional to. देखो, for conducting medium we know the skin depth S is given by square root under 2 by sigma omega mu. Omega is the frequency. Okay, so you can check. So skin depth is proportional to square root 1 by square root under sigma frequency. Okay, so this is for conducting medium, so D is your correct option. And similarly you should remember for bad, this is for good conducting medium. For bad conducting medium, okay, skin depth equals to 2 by sigma square root under epsilon by mu. Okay, अच्छा देखो एठी आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसी आगु क्वेश्चन नोटिस करिवो कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टिंग मीडियम. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन कंडक्टिंग मीडियम. लाइक कमेंट सेक्शन ले यारो आंसर लिखिवो. नेक्स्ट 43. In a homogeneous isotropic dielectric medium, the electric susceptibility and the relative permittivity are related by epsilon r equals to 1 plus j. Okay, so A is your correct option. Next, in a classical statistical system, Gibbs paradox is associated with the additive property of entropy. Okay, so B is your correct option.
Next, 45. The Davison Germer experiment provides the experimental confirmation of de Broglie hypothesis of matter wave. Okay, so B is your correct option. Next, 46. A point charge Q is placed at a distance r from an infinite grounded conducting plane. If the charge and the conducting plane are in AR, the electrostatic energy of this system is, okay, so this will be minus q square by 16 pi epsilon r. Okay, देखो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम्हें जेकोनोसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बुक रे तुमको मिल जो यार डेरिवेशन. ओके, बट लेट अस डिराइव वंस. ओके, सो एमिति किछि कंडीशन गिवन अछि ना कि ए इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन इज ग्राउंडेड. बेसिकली देखो ए प्रॉब्लम टा केमति सॉल्व होबो, इमेज प्रॉब्लम कांसेप्ट रू ना कि इमेज प्रॉब्लम. तो क्यू चार्ज इज गिवन एट ए डिस्टेंस आर, तो तुमको कोन करिया पड़िबो ना तार माइनस क्यू चार्ज नबाक पड़िबो ए डिस्टेंस आर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिफाइन करिबा फार्मूला कोन ना हाफ q1 v1 प्लस q2 v2. सो हाफ देखो फॉर चार्ज q v1 potential at this point because of the charge minus q, that will be minus kq by distance r plus r, that is 2r. Okay, plus charge q2 is minus q. Now potential at that side 0. Okay, so the electrostatic energy will be minus k q square by 4r. Okay, याको तुम्हें मन रखियो ए एक्सप्रेशन को कि माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r. नाउ k इज 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, so this will be minus q square by 16 pi epsilon naught r. Okay, देखो या सहित मन रखियो आउ किछि एक्सप्रेशन जेमति के अछि कोन न हमरो स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर ग्राउंडेड. ओके, तो जदि या पई गोटे चार्ज q d डिस्टेंस रे अछि कोठु ओरिजिन लु, ताले यार इमेज चार्ज कोठी आसीबो ना ओरिजिन लु केते डिस्टेंस रे आसीबो x डिस्टेंस केते ना r स्क्वायर बाय d. अब ये जो इमेज चार्ज रो वैल्यू कोन हबो q डैश, इमेज चार्ज रो वैल्यू हबो माइनस q r बाय d. अच्छा, क्वेश्चन थोड़े आछी देखिबो कि फॉर दिस ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन दिस सरफेस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज q, this will be minus qr by d. Okay, the same as image charge here. अच्छा, हाउ नेट गेट रे आछी एसएसबी एग्जाम रे भी रिपीट हेछि देखिबो क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर ए यूनिफॉर्मली for a cell charge uniformly distributed on a cell. So in this case electrostatic energy will be kq square by r, half kq square by r. And for a uniformly distributed charge density rho for a sphere, this is for cell, now this is for sphere, electrostatic energy will be 3 by 5 kq square by r. 47. The Clausius-Clapeyron equation is applicable only for first order phase transition. Okay, देखो second order phase transition ले कौन होची ना entropy और volume same, because first order of the gives first order derivative of gives free energy continuous, so these are uniform, so this is not applicable for, so Clausius-Clapeyron equation is not applicable for the second order phase transition. Next, 48. Which of the following represents the beta function? Okay, so here ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. देखो बीटा फंक्शन को हमें केमते डिफाइन करी करे कि बीटा, अच्छा ए बी टर्म ले देछि तो मु ए बी रे ही लिखुछि बीटा ए बी, आरो किछि एक्सप्रेशन अछि ताको मन रखिबो जेमति कि बीटा ए बी कोन ना बीटा ए प्लस 1 बी प्लस बीटा ए बी प्लस 1. आ कोन हे परिबे एक्सप्रेशन बीटा ए बी इक्वल्स टू बीटा ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू बीटा a plus 1 b divided by a equals to beta a b plus 1 divided by b. तो देखो ए एक्सप्रेशन हमें कौन लिख परिबा ना बीटा a b equals to a plus b by b beta a b plus 1. Okay, so a is your correct option. Now 49. Suppose a and b are
two commuting Hermitian operators, which of the following is true? They are commuting. That means the eigenfunction of A are also the eigenfunction of B. Okay, so B is your correct option. Next, 50. A shift resistor which is capable of shifting data left, right and parallel is called universal shift resistor. Okay, so D is your correct option. Next, 52. The boundary conditions for the electric displacement and the electric field at the interface of two homogeneous isotropic linear dielectric medium are. देखो हम कौन जଣା अछि E1 parallel equals to E2 parallel and D1 perpendicular is equal to D2 perpendicular. So the tangential component of electric field are continuous. So check the normal component of D and the tangential component of electric field are continuous. So B is your correct option. Next, if A and B are the Einstein's coefficient for spontaneous and stimulated transition respectively, which of the following corresponds to spontaneous emission of photons? देखो spontaneous emission पचारछि ताले कोन हबो A21. ओके सो B इज योर करेक्ट ऑप्शन. अच्छा देखो आहुरी दीटा कोएफिशिएंट डिफाइन करा जिवो कोन ना गोटे हला स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन आ गोटे हला स्टिमुलेटेड एमिशन. ये दीटा चेक करो कोएफिशिएंट कोन हबो तुमे कमेंट सेक्शन ले लिखिबो हला कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रो कोएफिशिएंट कोन हबो और स्टिमुलेटेड emission. Next, 54. In Bose-Einstein distribution, a given state can be occupied by any number of particles. So C is your correct option. Next, 55. The non-existence of electrons inside the atomic nucleus can be ascertained by using Heisenberg uncertainty principle. Okay, A is your correct option. 57. A gas is in thermal equilibrium at absolute temperature T and the gas molecules obey Maxwell-Boltzmann velocity distribution. If C1, C2 and C3 are the RMS speed, mean speed and the most probable speed of the molecule respectively, then their ratio. RMS speed kete? Na square root under 3 kT by m. Mean speed or average speed? Square root under 8 kT by pi m. And most probable speed square root under 2 kT by m. So the ratio will be root 3 square root under 8 by pi to root. Okay, so B is your correct option. The Laplace transform of sin AT. Okay, that is A by A square plus A square. Okay, so B is your correct option. Similarly, मन रखिबो cos AT ପାଇଁ कोन ना Laplace transform cos AT S by A square plus A square. Laplace transform of sin hyperbolic AT A by A square minus A square. Laplace transform of cos hyperbolic AT S by A square minus A square. Next, 59. The wave function of an one-dimensional harmonic oscillator has the dimension of L to the power minus 0.5. Okay, D is your correct option. देखो याकू केमती मन रखिबो जदि तुमे जानिछो भलो कथा बट जदि भूली जाइछो केमती डिराइव करियो ताको देखो आमे कोन जानिछो ना all wave function, all acceptable wave function will satisfy the normalization condition. Normalization condition आमे कहा पय लिखिबा देखो 1D पय लिखिबा तो कोन हबो psi star psi dx equals to 1. एटा हला normalization condition. तो देखो राइट हैंड साइड रे अछि कांस्टेंट 1 तामने डायमेंशन कोन 0 लेंथ रो जदि मु डायमेंशन लिखबी 0 लेंथ रो कोन पय लिखुची मु ना देखो लेफ्ट हैंड साइड रे जो dx अछि x ये कोन l1 तार लेंथ रो डायमेंशन 1 बट राइट हैंड साइड रे देखो l0 लेफ्ट हैंड साइड रे dx रो आसिला n1 तो आउ दिटा जो क्वांटिटी अछि हमरो साइ स्टार साइ सी कोन देबे डायमेंशन ना डेफिनेटली l-1 देबे देले जाई कि देखो कोन हबो ए इक्वेशन सैटिस्फाई हबो तार डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रे इक्वल हबो तो कोन हबो ए साइ स्टार साइ रु आछि l-1 ताबले गोटे साइ रो डायमेंशन कोन हे जिवो l-हाफ साइ स्टार हे जिवो l-हाफ तो 1D रे वेव फंक्शन डायमेंशन हबो l-हाफ सिमिलर वे रे तुम 3D पाई भी कैलकुलेट करि परिबो 3D पाई भी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखिबो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमर कोन आछि ना साइ स्टार साइ dv इक्वल्स टू 1 dv कोन दबो ना l क्यूब राइट हैंड साइड रे l0 तो साइ स्टार साइ रु कोन आसीबो l-3 तेनु गोटे रु कोन आसीबो l-3/2 सो इन 3 डायमेंशन
the dimension of the wave function will be L to the power minus 3 by 2. Next, 60. Which of the following are universal gates? NAND and NOR are universal gates. So C is your correct option. The resolving power of a telescope for light of wavelength lambda is proportional to. अच्छा, telescope resolving power. Aperture A divided by 1.22 into lambda. Okay, so this is proportional to 1 by lambda. So D is your correct option. Next, 62. The kinetic energy of a particle moving with relativistic speed is equal to its rest energy. The ratio of the speed of the particle to the light in vacuum is √3 by 2. B is your correct option. देखो ए टाइप रो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत थोर रिपीट होई छी हेले तो ए क्वेश्चन को भल से प्रैक्टिस करियो जेमति कि हमें जानि छु रिलेटिविस्टिक इफेक्ट रे काइनेटिक एनर्जी को केमति एक्सप्रेस करू ना mc² - m0c². से कौन देछि ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द रेस्ट मास एनर्जी. ये देखो टोटल एनर्जी mc², ये रेस्ट मास एनर्जी, तो k इक्वल्स टू m0c² इक्वल्स टू mc² माइनस m0c². ये जो m अछि हमें केमते लिखिबा तार एक्सप्रेशन ना m0c² डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² बाय c² माइनस m0c². लेफ्ट हैंड साइड रे अछि m0c². तो देखो हमको एठु कोन मिलियो एक्सप्रेशन देखो या को राइट हैंड साइड को नै गले मोर कोन हिजबो ना 2 इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस v² बाय c². तो एठु मते कोन केते मिलिबो देखो 1 माइनस v² बाय c² इक्वल्स टू 1 बाय 4. तो v बाय c जे केते हिजबो ना √3 बाय 2. हैना. सो b इज योर करेक्ट आंसर. Next, 63. A plane unpolarized monochromatic electromagnetic wave is incident from a dielectric medium of refractive index n1 on another dielectric medium of refractive index n2 at an angle of incident theta. If the reflected electromagnetic wave is completely plane polarized, then अच्छा देखो ए कंडीशन कोन जणा पड़ुची रिफ्लेक्टेड आमे जानि छु रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केतले प्लेन पोलराइज होबो ना जेतले इंसिडेंट एंगल ता हमर कोन होबो ब्रूस्टर्स एंगल से समान होबो हैला कि. तो इंसिडेंट एंगल विल बी दैट. तो देखो ये हला अनपोलराइज लाइट परपेंडिकुलर पैरेलल डीटा को कंपोनेंट छी आ रिफ्लेक्टेड रे कोन होबो. देखो ये क्वेश्चन भी बहुत तरह आछि कि ये जो परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट तो तार कंपोनेंट कोन हुए ना दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एको भल से मन रखिबो. आउ कोन रहिला रिफ्रैक्टेड रे ये कोन हबो ना पार्शियली पोलराइज्ड हैला कि पार्शियली पोलराइज्ड. तो एठी आ गुटे कंडीशन मन रखिबो एई एंगल जो कोन हबो ना 90 बा तमे कहि पारो जो रिफ्लेक्टेड एंगल आउ थीटा बी ये भी थीटा बी आउ रिफ्लेक्टेड एंगल मिसे की केते ना थीटा बी प्लस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री ऑलवेज इन केस ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल इज द इंसिडेंट एंगल. ओके, तो एठी से कोन पचाउची ना देन n2 by n1. तो ये पचाउची ब्रूस्टर्स लॉ ही हमें जानि छु tan थीटा will be equals to n2 by n1. So D is your correct option. Next, 64. A superconductor behaves as perfect conductor and perfect diamagnet. So A is your correct option. Next, 65. An ideal fermionic system is at absolute zero temperature. If n is the number density of fermions, the Fermi energy is proportional to. अच्छा, Fermi energy रो expression कौन आसे एकरे हमरो ना h cot square by 2m 3 pi square n to the power 2 by 3. So Fermi energy is proportional to n to the power 2 by 3. B is your correct option. Next, which of the following is a doubly magic nucleus? So देखो ऑप्शन चेक करो ऑक्सीजन 16 बिकॉज देखो 8 ऑक्सीजन 16 8 8. अच्छा मैजिक नंबर हमर कोन कोन दिले ना 2 8 20 28 52 सॉरी 50 82 126 इसमें मैजिक नंबर. तो देखो ऑक्सीजन ही सैटिस्फाई करूची डबल मैजिक नंबर 8 जेड भी 8 एन भी 8. So oxygen is the correct option. Next, 67. A plane conducting loop having a vector area A carries a steady current I and is placed in an external uniform magnetic field B. The torque on the loop is. अच्छा तो देखो ई कंडक्टिंग लूप अछि एरिया देछि करंट देछि त माने हमें मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करि परिबा कोन हे जिवो I टाइम्स A. तो एबे पचाउछि टॉर्क टॉर्क कोन हे जिवो ना म्यू क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड. सो इट विल बी I A क्रॉस B. Okay, तो ऑप्शन चेक करो D is the correct option. Next,
A gas 68 gas enclosed in a given volume is in thermal equilibrium. If the gas molecules are assumed to be spherical with diameter d, the mean free path of the gas molecule is proportional to mean free path ro expression kono kbt square root under 2 by d square p. So this is proportional to 1 by d square. So C is your correct option. Next, which of the following Boolean relations does not obey De Morgan's theorem? देखो फास्ट हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लिखिबा तापर किए सैटिस्फाई करने डी मॉर्गन्स थ्योरम कोन ना ए बी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार सेकंड स्टेटमेंट कोन ए प्लस बी बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार तो देखो डी तो सैटिस्फाई करूची ए भी सैटिस्फाई करूची बी सी रे देखो सी भी सैटिस्फाई करूची सी रे कोन अछि देखो ए डॉट बी बार रो होल बार अछि तो हमें जदी डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करिवा ए फर्स्ट रिलेशन को देखो ताले कोन हे जिवो ए बार प्लस बी बार बार और बी बार बार जे केते बी सो ए बार प्लस बी देखो सी भी सैटिस्फाई करूची बट देखो बी बी रे कोन अछि देखो ए प्लस बी बार कोन होबा कथा ए बार डॉट बी बार बट ए बी देछि तो बी इज नॉट सैटिस्फाइंग द डी मॉर्गन्स थ्योरम सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट 70 a plane polarized electromagnetic wave is incident normally on a quarter wave plate with electric field making an angle 45 degree with the optic axis of the quarter wave plate. The electromagnetic wave emerging from the quarter wave plate is देखो एटा कोन हबो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट हबो सी ऑप्शन सी इज करेक्ट अच्छा क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट रो किछ कांसेप्ट रिवाइज करनबो देखो क्वार्टर वेव प्लेट रे कोन करे ना इट इंट्रोड्यूस ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 4 बिटवीन ओर एंड ई रे जदि लैम्डा बाय 4 होउची पाथ डिफरेंस तने फेज डिफरेंस केते इंट्रोड्यूस हबो 5 बाय 2 हाफ वेव प्लेट केते इंट्रोड्यूस करे पाथ डिफरेंस ना 5 बाय 2 एलो फेज डिफरेंस केते इंट्रोड्यूस हबो 5 नेक्स्ट 71 is in thermal equilibrium at absolute temperature T. According to Rayleigh's law, the energy density U nu of black body radiation per unit frequency range at frequency nu is proportional to. अच्छा तो बेसिकली तुमको Rayleigh's law रे एक्सप्रेशन से पचाउची U nu एनर्जी डेंसिटी केते आसे ना 8 पाई nu स्क्वायर by c cube kbt so it is proportional to nu square t so A is your correct answer. सिमिलरली देखो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ रो भी एक्सप्रेशन ट्राई करियो मन रखिया पई जेमति कि एनर्जी डेंसिटी केते आसे हम ना 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय c क्यूब h न्यू डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय kbt minus 1 this is in terms of frequency and in terms of wavelength this is equals to 8 pi hc divided by lambda to the power 5 1 by exponential hc by lambda kt minus 1 okay next 72 the primary process of energy production in stars is nuclear fusion so B is your correct option 73 two conducting loops are placed close to each other in air when the electric current in one loop changes at the rate 1.5 ampere per second and EMF of 0.3 volt is induced. In the other loop, the mutual inductance between the two loop is. अच्छा देखो यार एक्सप्रेशन कौन की EMF I equals to mutual inductance अच्छा M into rate of change of current okay that is del I by del T तो एठू तुमे कोन M डिफाइन करि परिबो M हे जिवो कोन EMF by DI by dt ओके EMF केते गिवन अछि देखो 0.3 वोल्ट करंट केते अछि 1.5 तो याकू डिवाइड करो केते आसीबो 0.2 अब यारो यूनिट कोन हेनरी 0.2 हेनरी ओके सो C is your correct option next 74 the temperature at which the Joule Thomson coefficient changes sign is called inversion temperature that is your option A temperature of inversion next a monochromatic plane polarized light passes through an optically active medium of length L. The angle through which the plane of polarization of the light rotated is proportional to L. Okay, देखो rotation कितने ना theta equals to alpha L. Alpha is the rotational constant, so it is proportional to L. But जदि सी तुमको पचाउची specific rotation देखो rotation in देखो एटा हला crystalline material ले but जदि liquid रे पचार होउची तुमको
तालो सेही केस रे रोटेशन कोन हबो ना SCL, C इज द कंसंट्रेशन, ये जो S कोन ना स्पेसिफिक रोटेशन से केस रे कोन हे जिवो ना थीटा बाय CL, स्पेसिफिक रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 by L. Okay, next, in the low frequency limit, Planck's formula for black body radiation leads to Planck's formula in low frequency. Low frequency means high wavelength, and that is your Rayleigh-Jeans law. D is your correct option. Okay, and in high frequency limit or low wavelength limit, that will corresponds to Wien's displacement. Okay, next, 77. The ratio of the half life to mean life of a radioactive sample. अच्छा देखो हमको कौन जाना चाहिए रिलेशन ना T half equals to 0.693 by lambda. अब आमे कौन जानी चाहिए 1 by lambda ही कौन हमरो mean lifetime. Okay, so from here you can write T half by mean half life. देखो 1 by lambda टा ही हला mean half life, तो ताको आमे tau लिखिबा धर जो. So T half by tau केते हबो 0.693. तो रिलेशन कौन हबो ना A. Correct option is option A, 0.693. 78. The magnetic susceptibility of a material is a very small negative quantity. The material is a small negative quantity. मैंने कौन हबो diamagnetic material. Option B. Simply मन रखियो paramagnetic पाई कौन ना this is positive but the value is small. For ferromagnetic it is positive but value is large. Next, 79. If n represents the whole concentration in a semiconductor, the whole coefficient of the material is proportional. Whole coefficient expression कौन आसे कि ना R is equal to 1 by n. तो ऑप्शन चेक करो. अच्छा देखो ऑप्शन एटी मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक है कि ये RH प्रोपोर्शनल का होबो 1 by n को स्क्वायर रूट आसीबनी है कि. अच्छा RH रो आउ किछि एक्सप्रेशन अछि मन रखिबो जेंति कि कोन E by JB. ओके, next 80. The exchange of both energy and number of particles with the surroundings is possible in grand canonical ensemble. So D is your correct answer. देखो micro canonical ensemble हमें कौन देखुचे ना number of particles, volume, energy constant. So there is not possible of exchange of number of particles and energy. But in canonical ensemble, N, V, T are constant. So energy can be exchanged there. And in grand canonical ensemble, mu v t are constant. So in grand canonical ensemble, number of particles and energy can be exchanged with the surrounding. Okay, so we have completed up to question number 18. Remember, every question is an opportunity to learn and improve. Keep practicing and stay curious about the concept. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel and hit the notification bell so you never miss an update. Leave a comment below with your thoughts and any topics you would like me to cover in the future videos. Thank you for watching and all the best for your future exams. See you in the next video. Take care and keep studying. Thank you.